Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that in a triangle ABC, uh, angle B is equal to pi by 3 and angle C is equal to pi by 4. Okay, and let D divide BC internally. Okay, in the ratio of 1:3. Then sine angle BAD upon sine angle CAD is equal to 1 upon root 6, 1 upon 3, 1 upon root 3 and root 2 upon 3. Okay, so let's solve the question. So key concept for this question is, let's say this is triangle ABC. A, B, C. And opposite side of a angle is small a, opposite side of a angle B is small b, and opposite side of angle C is small c. Then we have a rule that is called sine rule. So sine rule says sine A upon small a sine B upon small b is equal to sine C upon small c, where small a, small b, small c are length of the side of this triangle, is equal to k, where k is constant. इन सब का रेशियो इक्वल होता है और किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. So in this question you have given a triangle ABC. So let's say this triangle is ABC. Okay, triangle ABC. Angle B is pi by 3. Angle C is pi by 4. And D, let D divide BC. तो BC को डिवाइड कर रहा है D इंटरनली, लेट से 1:3 में कर रहा है. तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 3x. ठीक है, तो हमें क्या करना है? किसका रेशियो बताना है? BAD. तो यहाँ से हम इसको D से मीट कर लेंगे. दिस इज पॉइंट D. तो हमें BAD और D. So let's say this angle is alpha and this angle is beta. So basically हमें alpha upon beta की वैल्यू बतानी. Okay, we have to find alpha upon beta. ठीक है, yes. So let's solve this question. Okay, now ठीक है, तो in a triangle AD, ठीक है, we are applying sine rule. So what says sine rule? Sine rule says then AD upon sine pi by 3 is equal to x upon sine alpha. Okay, so from here we can say AD is equal to कितना? Sine pi by 3 कितना होता है आपके पास? √3 upon 2 sine alpha. So let's say that is our equation number first. Okay, now in a triangle we have to triangle ACD. Again we have to apply here a sine rule. So that is AD upon sine pi by 4 is equal to 3x upon sine, because we have here AD is equal to sine pi by 4 की वैल्यू होती है 1 upon √2 and that is 3 upon sine beta. Let's say that is our equation number second. So from equation number first and second, इसका क्या है आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, so we can write from there that is √3x upon 2 sine alpha is equal to 3x upon √2 sine beta. Okay, so from here we can say that, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो, after cross multiplication we can say √2 से 2 कैंसिल अप हो जाएगा √2 टाइम, और √3 से 3 कैंसिल अप हो जाएगा √3 टाइम, x से x कैंसिल अप हो जाएगा. ठीक है, so we can say that from there क्या कह सकते हैं हम यहाँ से? साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √6. So implies that from here we can say sine alpha upon sine beta is equal to 1 upon √6. Okay, so here we have to find sine alpha, sine beta.
ठीक है, साइन भी होगा यहाँ पे क्योंकि साइन एंगल फाइंड करना है, साइन का एंगल फाइंड करना है। तो कितनी आ गई आपके पास, साइन अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू 1/√6। सो अवर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। Okay, so I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.